Greetings of the day, students. Today we are going to discuss the CUET paper of Business Studies for the year 2022. So you are aware that in Business Studies, basically the syllabus is limited on not only to the syllabus that is prescribed by CBSE, but in addition to that, there are few more chapters. So without much ado, let us quickly start with the things. You can see question number 1 on the screen. You have to fill in the blank with the suitable option. Which of the following is the managerial function that monitors organizational performance towards attainment of organizational goals? Now, the language seems a little confusing, but we need to focus upon the word monitors the performance towards attainment of goals. That means the goals have been set, the performance has been done, and now we are monitoring that whether the performance is according to the standards or not. So the correct option would be option number B, that is controlling, right? The option would be option number B. That is controlling, right? So let us move on to the next question. The next question is, again, you have to fill in the blank. Dash is the scientific technique through which F.W. Taylor devised the concept of assembly line. Now, children, this line has simply been picked up from NCERT, and the correct answer to this, you will find the answer to this in question chapter number 2, Principles of Management, under the heading Method Study. So the correct answer to this is method study, that is option number C, right? Let us move on to question number 3 now. Question number 3 says the rate of saving and investment, money supply, public debt, volume of import, volume of exports, all are the components of which dimension of business environment? Now, the examples themselves suggest that all these are the cases of economic environment, and therefore the correct option is option number A. Children, whenever you get to see the terms like saving, investment, money supply, debt, import, export, interest rate, inflation, all these pertain to economic environment. So the correct answer to this would be economic environment, option number A. Let us move on to question number 4. Identify the statement that does not refer to the feature of business environment. So which of these is not a feature of business environment? Let us see. Is the business environment dynamic in nature? Absolutely yes. Is it innovative? No. Is it totality of external forces? Yes. And does it have specific and general forces? Yes. So which of these is not the feature of business environment? It is option number B, that is innovative. Let us move on to the question number 5. Mr. Raj is the MD of the wristwatch company. He has systematically divided the work among all the departments. What has he done? He has systematically divided the work among all the departments so that there is clarity in thought and action, and to ensure that the work is carried out smoothly without any interruptions. Children, you are aware that as soon as the work is divided systematically, you eliminate overlapping of the work because you allot one work to one person, and therefore which point of importance of planning is highlighted here? Point number A, that is planning reduces overlapping and wasteful activities. Moving on to question number 6. In a manufacturing concern, division of work into key functions will include production, purchase, marketing, accounts, and personnel. These departments may be further divided into sections. Which type of structure is highlighted here? Children, you are aware that in your chapter organizing, दो तरह के structure हैं. One is divisional, another is functional. लेकिन जब हम divisional की बात करते हैं, तो in divisional we basically talk about the product specialization, whereas in functional we talk about functional specialization. Here, the division is not as per products, but as per the functions. Functions like production to be carried out, purchases to be made, and therefore the correct option is option number B, that is functional structure. Moving on to the next question, it is defined as the framework within which managerial and operational tasks are performed
It is simply the definition of organizational structure, and hence the correct option is option number B, that is organizational structure. Vasu is a hard-working employee in the organization. This is question number 8. Vasu is a hard-working employee in the organization. He has been working as a junior clerk for last 5 years. As Srinath, the senior clerk, has recently retired, he expected to fill the vacant position. But instead of vertically shifting Vasu, the company appointed Raman as a senior clerk through a placement agency. Vasu felt demotivated and frustrated. Identify the limitation of external source of recruitment discussed above. Now see, श्रीनाथ रिटायर हुए, वासु को लगा कि उनकी जगह ही विल बी प्रोमोटेड. वर्टिकल अपलिफ्टमेंट का मतलब प्रमोशन, लेकिन उनको अपलिफ्ट नहीं किया गया, उनको शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि बाहर से एक प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू रमन हैज बीन अपॉइंटेड. सो विच limitation of external source has been identified here? It is leading to dissatisfaction among the existing employee. Vasu is an existing employee of the organization, but because Raman, who's an outsider, has been put on a higher position instead of Vasu being promoted, it is causing dissatisfaction among the existing employees, and therefore the correct option is option number B. Moving on to question number 9, controlling function of an organization. Children, you are aware that both planning and controlling are forward as well as backward looking. Here it is controlling, so it is both forward and backward looking. So the correct option is option number C, that is controlling is both forward looking as well as backward looking. Why is it forward looking? Because what has happened cannot be controlled. We control only so that the mistakes do not get repeated in the future. Why is it backward looking? Because controlling is like a post-mortem. You analyze the things that have happened in the past and try to figure out that what are the deviations. Therefore, ye forward looking bhi hai or backward looking bhi hai. Let's move on to question number 10. In a bulb manufacturing unit, the range of defective bulb is decided at 5%. Any deviation that goes beyond the permissible limit of defect is to be brought to the notice of the supervisor. Identify the concept. Now see, this is the concept of control by exception. Not everything is worth reporting to the managers. Normally इसके बारे में कहा जाता है, one who tries to control everything ends up controlling nothing. Therefore we need to control by exception. यानी अगर एक certain acceptable limit तक deviations हैं, तो उनको सीनियर मैनेजर्स को रिस्पॉन्ड या रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती. Only when the deviations go beyond an acceptable limit, then only that should be brought to the notice of the superiors. Therefore, the correct option is option number A, that is control by exception. Let us move on to question number 11. Which of the following is not a limitation of controlling? Please don't miss the word not. Difficulty in setting quantitative standards. Children, do you think that setting quantitative standards is difficult? No. It is rather easy. Qualitative standards को set करना मुश्किल होता है, quantitative standards को नहीं. So I think let us go through the other options also. Yes, controlling is generally resisted from the employees. It is a limitation. Ensuring order and discipline. Costly affair. Okay, I think that the correct option is option number C here. और यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, ऑप्शन नंबर ए में क्वालिटेटिव लिखा हुआ होना चाहिए. It should have been qualitative here. By mistake, it is quantitative written. To make it qualitative standards, difficulty in setting qualitative standards, it is resisted by the employees. It's a costly affair. But ensuring order and discipline is a merit of controlling, not a limitation. Question number 12 पर आते हैं. Quantitative standards should be set so that it is easier to match the actual performance with the desired performance. Again, which function is being talked about? Very clear, controlling. That is option number B. Question number 13 पर आते हैं. The cost in the process of raising fund through equity. The cost in the process of raising funds through equity. यानी जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसको शेयर्स इशू करने के लिए जो कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, दे आर कॉल्ड एज द फ्लोटेशन कॉस्ट.
द इनिशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, चाहे उसमें अंडरराइटिंग एक्सपेंडिचर हुआ या कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे जो खर्चे होते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. Moving on to the next question, question number 14. A trading organization comparatively needs lesser, more or same? No. एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, होलसेल रिटेल, यहां से सामान खरीद कर वहां बेचा, तो डू यू थिंक दैट दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? नो. मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, तो दे नीड कंपैरेटिवली लेसर. Therefore, the correct option is option number A. Question 15 पर आते हैं बेटा. Rajat is planning the breakup of his finance to know the amount of capital that he would utilize to purchase fixed assets and current assets. Identify the financial decision taken by Rajat. You are aware, तीन तरह के decisions होते हैं financial management में. One is investment decision, जिसमें हम तय करते हैं कि कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स और कितना पैसा करंट एसेट्स में जाएगा. Financial decision is the collective decision. Investment, dividend and financing decision put together are called as financial decisions. So the correct option is option number A, that is investment decision. Moving on to the next question, question number 16. Debt normally does not control. Now, what do the debt does not cause? A dilution of control. It does not cause dilution of control. You know that the people who give debt to the company, they do not have any control over the affairs of the company. They do not have any voting rights. Voting rights are held exclusively by the shareholders. The shareholders are the one who make the decisions, and therefore debt does not cause any kind of dilution of control. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. रोहित हैज 500 shares of Ruchi Soya Limited. Ruchi Soya further issued 1 lakh equity shares and offered Rohit to buy one more equity share for every 5 shares held by him. यानी रोहित इस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है. अब रुचि सोया को दोबारा से शेयर्स इशू करने, और उन्होंने रोहित को ऑप्शन दिया है कि भैया आपके पास जो 5 शेयर है, हर शेयर के ऊपर हम आपको 1 शेयर परचेज करने का ऑप्शन दे रहे हैं. कौन सा मेथड ऑफ फ्लोटेशन है ये? यू ऑल आर अवेयर. यस, यू आर राइट, इट इज राइट इशू, जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये प्रिविलेज दी जाती है दैट वो प्रो राटा बेसिस पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऊपर शेयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर किसी और के फेवर में अपनी राइट को वेव ऑफ कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. बेनिफिशियल ओनर अकाउंट with a depository participant for holding and transfer of financial securities is known as. बेटा, जब आप एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एक ऐसा अकाउंट खोलते हैं जिसमें आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो आपको मालूम है उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट. फुल फॉर्म इज डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट. डीमैट बिकॉज यू आर होल्डिंग द शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, इन वर्चुअल फॉर्म, and therefore such an account is called as demat account. Hence the correct option is option B, demat account. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. According to the Consumer Protection Act 2019, identify who among the following cannot file a complaint. अब आपको मालूम है कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है. कंज्यूमर खुद कर सकता है, कंज्यूमर के बहुत सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पर कोई एक कंज्यूमर कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, राइट. और कौन नहीं कर सकता? कोई भी पर्सन जिसने गुड खरीदा है किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, रीसेल के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए, वो नहीं कंप्लेंट फाइल कर सकता. तो यहां पर ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. यानी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर भी कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अ पर्सन हु अवेल्स सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, वो नहीं फाइल कर सकता कंप्लेंट, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन 20. मोहिनी वेंट टू अ शॉपकीपर टू बाय हेयर ऑयल. Shopkeeper forced her to buy
a particular brand of oil out of various brands available with him. Which right of Mohini has been violated? अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है और इसमें अभी भी दे आर सेइंग राइट टू चूज. अब इस राइट का नाम बदल गया है. कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस राइट नाउ? क्या नाम है इस राइट का? नाउ दिस राइट इज कॉल्ड राइट टू बी अश्योर्ड. क्या कहते हैं इस राइट को? राइट टू बी अश्योर्ड. मतलब वही है बट राइट का नाम अंडर 2000, पहले 1986 यानी 1986 वाले एक्ट में इसको राइट टू चूज कहा जाता था, लेकिन अब 2019 वाले एक्ट में इस राइट का नाम बदलकर हो गया राइट टू बी अश्योर्ड. तो करेक्ट ऑप्शन इज राइट टू चूज या राइट टू बी अश्योर्ड. राइट. सो अब पेपर में अगर ऑप्शन आएंगी तो राइट टू चूज नहीं आएगा क्योंकि दिस इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब जो राइट लिखी आती है दैट इज राइट टू बी अश्योर्ड. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. आईएसआई मार्क इज फाउंड ऑन, यू ऑल आर अवेयर, आईएसआई मार्क किस पर मिलता है? स्पाइसेस पर एफएसएसएआई, ज्वेलरी पर हॉलमार्क, वुलन क्लोथ्स पर वूल मार्क. तो आईएसआई किस पर मिलेगा? इलेक्ट्रिकल गुड्स पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. If a technology required to convert the idea of product offering is available, it is known as dash feasibility analysis. अगर एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एक रिक्वायर्ड आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए और अगर हम उस तरह का एनालिसिस करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज टेक्निकल फीजिबिलिटी एनालिसिस. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? टेक्निकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन 23 पर आते हैं. एज द वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजिंग is getting more and more expanded, it is becoming difficult to make advertising messages heard by the target prospects. This will affect the social values, not at all. Preference, no. Effectiveness, yes. Advertisements are becoming lesser and lesser effective. Why? Because they've not been able to reach the target audience or target prospects. So the correct option is option number C. Let us come to question number 24. That part of the brand which can be recognized but cannot be uttered, यानी जिसको बोला नहीं जा सकता पहचाना जा सकता है, तो वो क्या है? ट्रेडमार्क. जैसे आपने देखा होगा मर्सिडीज के केस में द सिंबल लाइक दिस इज द ट्रेडमार्क ऑफ मर्सिडीज एंड सो ऑन. सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी मीन बाय ट्रेडमार्क एंड देयरफॉर दिस इज द पार्ट जिसको पहचान तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग? नॉर्मली द पीपल ऑब्जेक्ट टू एडवर्टाइजिंग. अब इसमें से किस चीज को हम ऑब्जेक्शन कंसिडर नहीं कर सकते? एडवर्टाइजमेंट व्हिच मेक्स सिमिलर क्लेम कंफ्यूज द बायर, दिस इज एन ऑब्जेक्शन. इट इज अ वेरी इकोनॉमिकल मोड, ये ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता. देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. बाकी दोनों भी ऑब्जेक्शंस हैं. डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर प्रोडक्ट एंड अंडरमाइन सोशल वैल्यू. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. 26 पर आते हैं. द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019 सजेस्ट दैट साइकोलॉजिकल स्टडीज कैन बी यूज्ड इन रीम ऑफ टैक्स कंप्लायंस. It is in favor of using religious norms such as dying debt is a sin to improve tax compliance. Identify the related dimension of business environment. अब बहुत कुछ देख करके लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या होगा इसमें. पहली बात तो क्योंकि इट इज अबाउट इकोनॉमिक सर्वे तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक डायमेंशन तो होना ही चाहिए. उसके अलावा इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस नॉर्म्स, देयरफॉर सोशल भी होना चाहिए. Other than these two, I can't see anything else. Okay. In the favor of using religious norms such as debt dying to improve tax compliance. Okay, yes. It is about tax compliance and we are talking about an act. Therefore, it should be considering legal also, right? So A and D, the best choice among all these. हालांकि अगर social भी होता तो हम ले सकते थे, but social को option में दिया ही नहीं है. So it is A for sure and legal also. So the correct option is option A.
That is A and D. Moving on to the next thing, planning is deciding in advance what to do and how to do. It's not now, children. Now nahi hai ye. Isko how kar lijiye. It is how to do. Choose the correct sequence of the steps to make the process of planning. अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन है. आपको स्टेप्स चूज करने हैं. सबसे पहला स्टेप यूजुअली होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो इसमें है नहीं. Then the next step is developing premises. So out of the given one, this should be first. Then identifying all the alternatives, this should be 2. This should be 2. D should be 2. Then evaluating should be 3. Selecting the best one should be 4. And follow-up action should be 5. Therefore, the correct sequence is A, D, C, E, B. A, D, C, E, B. A, D, C, E, B. Therefore, the correct option is option A. A, D, C, E, B. Right? Let us move on to the next thing. अगले पर चलते हैं. From the below description, arrange the organizing process in a sequential order. अब organizing की process है. Identification and division of work is first step. Departmentalization is second step. Assignment of duties is third step. And establishing reporting relationship is fourth step. Therefore, the correct sequence is C, D, A, B. C, D, A, B, C, D, A, B, which means C, D, A, B, option number B. C, D, A, B. Right? Moving on to the next question. Question is question number 29. 29th question पर चलते हैं बेटा. Identify the correct sequence in the staffing process. सारी process आ गई है. देखिए पहले planning की, फिर ऑर्गेनाइजिंग की और अब स्टाफिंग की. नाउ रिकॉल करिए स्टाफिंग की प्रोसेस. सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग किया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कितने लोगों की हमें जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके बाद रिक्रूटमेंट होता है, जिसके अंदर हम सिचुएशन वेकेंट एडवर्टाइज करते हैं. फिर हम एम्प्लॉइज, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को बुलाते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं. फिर उनकी ओरिएंटेशन होती है. एंड देन वी डिसाइड अबाउट who should be kept and who should not be. Let us see how should this be done. सबसे पहले ओके, ऑप्शन नंबर डी, number and type of human resources available are required and assessed. So this should be option number, yani that should be the first step, D, right? This should be step number 1. इसके बाद advertising the situation vacant, यानी B. D के बाद क्या आएगा? B, step number 2. फिर रिक्रूटमेंट के बाद a series of test and यानी सिलेक्शन हो गया, यानी next is E. So the next thing is option, E point. That should be the third step. अब जो सिलेक्ट हुआ है बंदा, उसको आप बुलाएंगे ऑफिस में और उसको बताएंगे दैट भैया क्या पोजीशन आप एक्वायर करेंगे, उसको ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराएंगे. दैट इज स्टेप नंबर 4, यानी कि सी. And last में training etc. must be conducted. So that is step number 5. So the correct sequence is D, B, E, C, A. D, B, E, C, A. Option B, D, B, E, C, A. This is the correct one. ठीक है. So you should be very, very careful, children. जब आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जैसे मैंने किया इसी तरीके से आप उसके आगे लिख लें 1, 2, 3, 4, 5 एंड अकॉर्डिंगली डू इट सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू मेक अ चॉइस. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. अगेन स्टाफिंग. द फर्स्ट अमंग देम विल बी व्हाट? जो दिए हुए इनमें से सबसे पहला है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. बंदा सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आप उसका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करते हैं, तो दिस शुड बी स्टेप नंबर 1, राइट? होना चाहिए आपका फर्स्ट स्टेप. फिर प्लेसमेंट के बाद द सेकंड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्टेप 2. फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टेप 3. उसके बाद आते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग 4 एंड कंपनसेशन 5. सो इट शुड बी CBADE. CBADE. CBADE, that means option number C is the correct one, right? So 30th question का आंसर option C. Moving on to the next question, that is question 31. Which of the following statements
are related to the limitations of planning. Planning leads to rigidity, बिल्कुल ये limitation है, तो this is correct. It is futuristic, ये limitation नहीं है. It reduces creativity, ये भी limitation है. It doesn't guarantee success, ये भी limitation है. It involves decision making, ये limitation नहीं है. तो limitations कौन कौन सी हैं? A, C and D. A, C and D यानी option B is the correct choice. A, C and D. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन 32. Capital market consists of, children, financial markets are of two types: capital market and money market. Money market is the short term security market, whereas capital market is the long term security market. तो आपको मालूम है that treasury bills and call money ये दोनों मनी मार्केट का हिस्सा हैं. जबकि अगर मैं बाकी चीजें देखूं, डेवलपमेंटल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज, ये तीनों कैपिटल मार्केट का पार्ट है. देयरफॉर ए, बी एंड सी, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? चिल्ड्रन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यस, एक्सटर्नल. ट्रांसफर नो, इट इज इंटरनल. कैजुअल कॉलर एक्सटर्नल. कैंपस एक्सटर्नल. प्रमोशन इंटरनल. Therefore, the correct option is A, C, and D. A, C, and D. Option A is the correct one. A, C, and D. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. SEBI is an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market. Which of the statements is correct about SEBI? SEBI was established on 12th April 1988. Absolutely right. Act of Parliament that SEBI is SEBI Act 1994. No, children. Now see, we will be very careful. It is not 1994. SEBI Act was passed in the year 1992. Therefore, B statement गलत हो गया आपका. Basic purpose is to form new enterprises. Not at all. It is to regulate the existing enterprises. यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. SEBI doesn't protect the right and interest of investor. It is there for protection. यानी ये statement भी गलत है. SEBI is a separate regulatory body. बिल्कुल सही. यानी सही statement सिर्फ दो ही हैं, एक A और एक E. That means the correct option is C, यानी A and E only. Moving on to the next question. From the following, identify the drawbacks of external sources of recruitment. Wider choice, it's a merit, not a drawback. Dissatisfaction, बिल्कुल ये drawback है. It's a lengthy process, ये भी drawback है. It's a costly process, ये भी drawback है. Competitive spirit, does it promote or kills the competitive spirit? It kills the competitive spirit. Therefore, ये तीनों drawbacks हैं. Competitive spirit को develop नहीं करता, तो ये drawback नहीं है. B, C and D. The correct option is option B, B, C and D. You have to match these lists. Very simple question. People and material must be in suitable places. Order. Principle resembles with military organization. Which of these principles resembles with military organization? One should have only one boss. Unity of command. It minimizes the need of penalties. Esprit de corps. And finally, employee should be given reasonable time and stability of tenure. So A2, B4, A2, B4, C1 and D3. Right? A2, B4, C1 and D3. Any option C is the correct one. Correct option is option C. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. मैचिंग अगेन द लिस्ट. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सर्व्स एज द बेंचमार्क. You have to analyze the deviations. Management by exception. Measurement of actual performance. Sample checking. And comparing actual standards reveals the deviation. So A goes with 4. Very clear. ऑप्शन सी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए के साथ 4 मैच कर रहा है, बी के साथ 1, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 3. यस, एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन टू चूज. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन 38. अगेन मैचिंग. इट सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. कौन सा एक्ट है कंज्यूमर्स के लिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. सो ए गोज विथ 3.
अब देखो बहुत टाइम नहीं लगाते, ए गोज विथ 3, बाकी ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं। बी विथ 4, फूड एडल्ट्रेशन, बी विथ 4, यस फूड एडल्ट्रेशन बिल्कुल सही। अगेंस्ट वेट एंड मेजर, सी गोज विद 1, बिल्कुल सही। एंड फ्रॉडुलेंट मार्क्स, ट्रेडमार्क, बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए विथ 3, बी विथ 4, सी विथ 1 एंड डी विथ 2। Let us move on to question number 39. Again, matching. Separation of planning and execution function. Children, recall functional foremanship में टेलर ने सजेस्ट किया था that even at supervisory level planning और execution अलग अलग होना चाहिए. Therefore, A goes with 4. अब देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें A goes with 4. बाकी भी देख लेते हैं. Setting benchmark for every business activity यानी कि setting of standards. Correct. Eliminating superfluous varieties, yani C goes with 2 and D goes with 3. Therefore, the correct option is option B. Right? Moving on to the next question, match the lists again. Capital market, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. अब देखिए सबसे लो रिस्क वाली मार्केट कौन सी होती है? मनी मार्केट, है ना? इसका मतलब बी गोज विथ 3. लेट अस सी, B3 यानी बी भी हो सकता है और सी भी. बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं. Capital market, transfer of investable funds from saver to entrepreneur seeking to establish new enterprise. Okay. Consists of developmental bank, commercial bank, stock exchange. So A should go with 2. A should go with 2. B should go with 3. Primary market is for new enterprises and secondary market is for existing enterprises, right? So the correct option should be A2B3, यानी कि option C. अगले क्वेश्चन पर आते हैं चिल्ड्रन. नाउ देर आर 10 मोर क्वेश्चंस, उसमें से 2 केस स्टडीज हैं. 41 to 45 would be based upon case study 1 and 46 to 50 would be based upon case study 2. Let us quickly read case study 1. Mr. Murthy is the chairman of a leading business organization. He grabs all possible opportunities and leads the organization by example and trust. He always motivates his team member and introduces a number of motivational schemes like employees are offered share at a price lower than the market price. They are given individual autonomy. He realizes that satisfied and secured employee can best focus on organizational success, etc. Yani, this is majorly about the incentives. At what level of management is Mr. Murthy working? Is the chairman, you know children, chairman ka matlab he must be working at the top level. So correct option is option A. 42nd पर आते हैं. He grabs all the opportunities and leads the organization by example and trust. Which quality of leadership is depicted here? He leads by example, yani initiative, right? Next question, question 43. He ensures hiring competent people for various jobs. Hiring of the personnel, which function? Staffing, yani option C. Again, question 44, above statement describe a step involved in one of the functions of management. Okay, every employees are required to undergo training. Their jobs are well defined, regular feedbacks are provided so that long term, किसके अंडर आता है training? It all comes under staffing, right? तो staffing के अंदर जब आएगा तो किस में आएगा? Statement describes the step, यानी okay, staffing में जब आप उसके लॉन्ग टर्म फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल. Therefore, the correct choice is option D, यानी performance appraisal. It is a step in the process of staffing. 45th question पर आते हैं. He has also devised various ways to know the reaction of employees. Reaction, जब कम्युनिकेशन की प्रोसेस में आप अपनी कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है फीडबैक. Therefore, the correct option is option D, यानी कि फीडबैक. अब अगला केस स्टडी आ गया मिस्टर मूर्ति. अच्छा, सेम केस स्टडी. वाओ. So we don't have to read it again. Employees are offered share at a price lower than the market price. कौन सा इंसेंटिव है? स्टॉक ऑप्शन. They are being offered shares. इसका मतलब the option, the correct is option B, यानी stock option. 47th, identify the need satisfied. Line पढ़ लेते हैं. Employees are given autonomy and reward for their performance. You know कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है? Esteem needs. Option C.
आपको मालूम है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल वन, बिलोंगिंगनेस, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, एंड देन कम्स एस्टीम नीड्स, जहां पर आप वर्कर को ऑटोनॉमी देते हैं, उसको स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज एस्टीम नीड। यहां पर जो नीड सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज ऑप्शन सी, एस्टीम नीड्स। Let us move to question number 48. All communication must be recorded and filed in the office. अब कौन सी कम्युनिकेशन है जो रिकॉर्ड की जाती है, फाइल की जाती है? इज इट द इनफॉर्मल ग्रेपवाइन, लेटरल? नो, इट इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फॉर्मल। 49th क्वेश्चन पर आते हैं। एम्प्लॉइज वर गिवन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस। कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जा रहा है? एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन, राइट? यहां पर उन्हें कोई स्टेटस वगैरह नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉई हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, यानी उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया गया, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर मूर्ति ऑलवेज मोटिवेट्स हिज टर्म एंड इंट्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ मोटिवेशनल स्कीम्स। अब कौन सा स्किल है? दो दो बार मोटिवेशन यूज कर दिया तो ऑटोमेटिकली विद स्किल, मोटिवेशनल स्किल, यानी ऑप्शन बी। Children, I believe that the paper is extremely simple and it is not at all difficult to score 100% in such kind of paper. So all the best to all of you. That is all about CUET 2022. I hope you people are preparing well. All the best once again. Thank you.